ओके आई गेस द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो भाइयों देखो, ऐसा हुआ था कि इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमको याद आया कि हमारा माइक जो है वो अटैच्ड नहीं है। तो ऑडियो के नाम पे 0/2। तो हमने क्या किया, वापस से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं वापस से। एनीवेज, तो देखो हम आपको बता देंगे आज की। यार मैं ना डॉकर करके एक चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ। सो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज टू डॉक्यूमेंट दिस मोमेंट, ठीक है, वेयर आई डिड सम वर्क एंड आई क्रिएटेड समथिंग एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस, ठीक है। तो be with me on this journey and let's learn together, क्योंकि I know I'll make mistakes but just me, ठीक है। तो there are probably a lot of things which I have learned, ठीक है। तो that would be my learning। तो let's say सबसे पहले समझते हैं कि डॉकर है तो है क्या चीज़, ठीक है, और इसकी नीड क्यों आई। तो ऐसा होता पहले कि ना पहले अगर लोगों को अपनी एक फ़ाइल मैनेज करनी होती थी, एक एप्लीकेशन मैनेज करना होता था, तो दे यूज़ टू हैव डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, ठीक है, बड़े बड़े सर्वर्स, एंड दो सर्वर्स यूज़ टू कंटेन लाइक capture a lot of space and उनकी operational cost plus उनकी maintenance cost was a lot. Then came virtual machines which had the same downsides but had some advantages too, ठीक है। बट ये मतलब तुम इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो खुद से भी, बट मैं तुम्हें एक ऊपर से जिस्ट दे रहा हूँ कि मेरी लर्निंग्स क्या रही इसके अंदर। तो डॉक्टर भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि यार तुम वर्चुअल मशीन भी हटाओ, ये भी हटाओ। मैं तुम्हें एक सोल्यूशन देता हूँ, दैट इज़ कि अगर तुम्हारे पास एक फाइल्स बहुत सारी एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक एप्लीकेशन इज मेड ऑफ फाइल्स, राइट। सो मैं तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ कि तुम लोग में एक काम करो, इतनी सारी फाइल से एक बंडल बना लो और वो बंडल को एक दूसरे को देते रहो। तो लेट से अगर मेरे पास एक ऐप है, ठीक है, नाउ ये ऐप मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर या मेरे सिस्टम के ऊपर बनाया है। नाउ अगर मेरे को इस चीज़ को किसी और को सेंड करना हुआ, ठीक है, तो आई विल प्रॉब्लली हैव टू ट्रांसफर द फाइल्स, आई वुड हैव ट्रांसफर्ड द फाइल्स एंड दैट गाय वुड हैव टेकन केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। Whereas with Docker, what I will do is I will make a bundle of those files and then send that bundle to the guy, so that now that guy has to just do uh, um, build the same container on his machine. I don't know if I'm correct here or not, but I think आगे आने वाले कुछ मिनट्स में if you are with me together, I have done something and let's try experiment it live, ठीक है, क्योंकि मैंने अब तक उसका हाथ भी नहीं लगाया। तो I'll be learning with you guys right now and I'll be sharing all my journey learnings with you live, ठीक है। तो क्या होता है ना कि तुम्हें अगर डॉकर का बता दिया हमने कि भैया एक गुच्छा बना दिया फाइल्स का, उसको कहीं पे भी भेजो, मैं इसके यहाँ तुम इसको मैक पे चला लो, लिनक्स पे चला लो, विंडोज़ पे डालो, तुमको इंडिया में चला लो, पाकिस्तान में चला लो, चाहे तुम कहीं भी चला, वो सेम ही रहेगा। तो दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय डॉकर एंड टू leverage this kind of tech we have right now. What I will try doing is कि I have tried doing it, ठीक है। तो I'll just show you now कि होता कैसे। तो सबसे पहले we have to understand a few components, that is कि डॉकर इमेज क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको कंटेनर बनाना है, ठीक है, कंटेनर itself is a kind of a machine, it's an independent machine which can run anywhere, ठीक है। So take it in my words like that कि let's say you have to build a machine, a machine learning app, ठीक है। For that what all things do you need? You will need Python, right? You will need probably some requirements, right? That will be sklearn, numpy, pandas, right? What else do you need? You might need a terminal, right? A terminal where you can run your commands to run it, okay. You might also need a working directory, correct. So what will happen is कि you take all these steps together and these steps which are being followed to make an app or docker container. These steps which are being followed to create a docker container is called as your docker image, ठीक है। तो basically what we are trying to do here is that we have image, right, which we are building on our computer, and that image can be used by anyone. No, so that the container which is an end product of it can be used by anyone in the world. I don't know if I'm making sense or not, but if I'm wrong also, no, I'll be, by the end of this video I'll probably get myself correct. Just hang on with me, okay. तो देख लेते हैं first. So firstly we'll see कि how do we make a docker file, right? Now I do not have an extensive code base of it because I ran a few experiments a few hours back, and what happened was that I created some containers on my docker hub on my Linux system, okay. So right now I am on my Windows machine, right? This is purely Windows, ethically Windows. So what I'll try doing here is that I will I'll try to take those containers and use them over here. Now I don't know how to do that. I still haven't figured it out, that what will be the pathway, and for that exactly I'm here just for that, right? So let's start, okay. So firstly we are creating an image. So this is an image, and this is how an image goes, okay. So firstly what you do is you specify as to what your Python version is. Now presently there is 3.11, 3.10 versions, but I am on 3.8 because this is more stable, I think, and most of the libraries are compatible with it, and hence I'm using 8 till date. Many people use 8, right? I'm not the only one. Then
give your directory paths as to which directory you are working in and which directory you will file your paths, right? Or the application documents or files where you find all these. And then you probably give your run command for the terminal as to what all things do you want to run. Okay? And then you say, I'm still confused as to if there has to be Python 3 or Python. Um, but if it's in terminal, I don't think so it will make a difference, right? Right. Nah, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखेंगे चल बाद में. Like not like now because I do not have that luxury right now, but probably next time. Yeah, next time. Okay, next time करेंगे. तो इधर मेरे को फिर मैंने क्या बोला कि भैया हमारे पास streamlit run app.py, ठीक है, हमने streamlit app बनाया था. तो this is your docker image which you are building on your local PC to make a container. So what I will now do is that कि हमको तो मैंने अब से कुछ देर पहले एक लिनक्स सिस्टम पे अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर ली, इमेजेस से कंटेनर्स क्रिएट कर लिए थे. And what I have done is I have created those containers in a public space. So what's the public space? Public space is a space where you can put your containers so that other people can access it. ठीक है, तो oh shit, I haven't changed my view. Sorry for that. तो मेरे को दिखाना था कि this is how docker image looks like. I'm so sorry, मैंने उसको पहले शो नहीं कर पाया. But if anyone is not able to do it, this is how you do it. You specify everything you need. Probably just recap everything. ठीक है. सॉरी फॉर दैट. अपन आगे बढ़ेंगे, अपन वेट करेंगे अभी, ठीक है. तो वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन नाउ एंड रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, तो या ओके ना, उससे पहले बिफोर वी गेट अ लिटिल मोर इनटू इट, अगर किसी ने डॉकर इंस्टॉल, इफ एनीवन हैजंट इंस्टॉल्ड डॉकर येट, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन दिस वेबसाइट, ठीक है. कम टू डेवलपर्स गेटिंग स्टार्टेड एंड probably just download the docker desktop for your system, ठीक है. Anything which suits you is the best. You do not have to follow everyone's advice. Which should do what suits you, okay. So my next step in this process will be that I have to show you that what I did previously and what we are trying to do in the upcoming part of the video. That would be that I am on Docker Hub. You can just do a sign in and everything will be set up for you, okay. What you do is that I was on my Linux machine, okay. Okay, I think probably this should be enough. So I was on my Linux machine and what I discovered was that I built an image. Then I built a container on top of it. With the help of it, I built a container, and that container was pushed to Docker Hub. ठीक है. So this is Docker Hub and this is my image. ठीक है. All of these are the same apps with different names. This is an Iris app which was used by me, right? Now what I have to do is I have to try pulling it from Docker Hub. Now that because I have pushed it earlier, now I have to try to pull it from the Docker Hub. Now I don't know exactly how do you do that. How do you do that? I have no idea, and I'll do just that right now. ठीक है. Be with me as to how you pull from Docker Hub and use it on this system. And this is my first hands-on experience. So भूल चूक क्षमा. That means sorry for the inconvenience you're facing. Thai पप्पू. ठीक है, देखते हैं. सीन चेंज कर ले वापस. ठीक है, तो let's how do you do that. Pull image, pull Docker container from hubby. ठीक है. Docker pull. Exactly. How do you pull a Docker file? So for pulling a Docker file, you say name. Okay. How do you do that? Image pull Debian. I will probably do this first. Okay. I will go to my terminal. Okay. And I will check. I will try to docker log out if there is any command like that. Log out from the Docker registry, log into the Docker registry, right? So I have logged in, I logged out, right? So now what I try to do is I will do docker login. Username will be Shyam epic EIC, right? And the password will be SHYM. तुमको पासवर्ड बताऊँ मैं ऐसे बैठे बैठे. यार क्या सोचते हो तुम. Anyways, so this is how I logged into Docker, I guess. I don't know if it will log in or not. Docker Hub और Docker अलग अलग तो नहीं है, डिफरेंस मेरे को नहीं पता है. So I have to see if I have the correct Docker or not. Anyways, जब तक ये हो रहा है ना तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे. मतलब इधर 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 आ रही छुपरे. हाँ बहुत बढ़िया. Okay. Error response. Timed up. Username. I don't know if it will happen, but anyways. ठीक है. Image pull Debian. Debian bullseye.
contains multiple layers in the example. Image consists of single layer. Layers can be reused by images. For example, Debian bullseye image shares its layer with the Debian latest. Pulling the Debian builds eye. Therefore, only pull the metadata. अरे यार ये टाइम आउट क्यों हो रहा है इधर? How will I pull the image then? Can I see Docker desktop if there is any help written there? Docker desktop. I don't know मेरी बैटरी भी बचेगी नहीं. I'm 36% on. This sucks. This sucks a lot. Seriously bro. तो सबसे पहले साइन इन, ठीक है. नहीं यार, this was not the one. I did created a lot of things, right? यार ये गलती है यार, हमको ये नहीं चाहिए. साइन आउट प्लीज़. hub.docker, right? What if I say, can I do like a quick this? I'll say sign in, ठीक है. साइन इन के लिए it was Shyam epic. वो लॉगिन हो तो गया था यार, क्या दिक्कत कर रही थी, तो ठीक है. ओके, ये सही था. सो इफ आई से साइन इन फ्रॉम हियर, ओके, ओपन डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है. ओके, चल बढ़िया. तो दैट मीन्स इफ आई कम हियर टू कंटेनर्स, जैसे इमेजेस, मुझे ना थोड़ी चीज़ें देखनी, जैसे कि मेरे को एक टर्मिनल चाहिए, राइट. इंजन इज रनिंग, वी एम मेमोरी यूजर्स, सी पी यू यूजर्स कनेक्टेड टू हब, ठीक है. यार मुझे ना कुछ चीज़ें और देखनी. हब 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 पे जाऊँगे तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया कि मैंने ऐप बनाया था, ठीक है. तो दिस वॉज माई ऐप. नाउ हाउ डू आई पुल इट? ओके, हियर इज द पुल थिंग. You can do the same fucking thing with the help of Docker यहाँ से, I guess. Can I see Docker here if it is possible? है क्या? ओ भाई यही तो चाहिए था. तो अगर मैं बोलूँ Docker, यार यहाँ पे नहीं यार, ये गलत जगह खुला हुआ है. I have to go to a different file, ठीक है. I'll come here, I go to deep learning, I come to here, I say cmd, and I will now do a Docker pull. I have to pull what, by the way? भूल गया. I'll say iris, ठीक है. I will pull iris, right? I need cmd. Yeah, that's cmd. I'll say iris using the default tag as latest. Now I am confused as to it will run or not. Will it run? Because it is like 500 MB of file. Let it give some time to execute itself. तो तब तक इसको थोड़ा सा बाजू में रखो, ठीक है. अच्छा भाई, अनफॉर्चुनेटली मेरी स्क्रीन पे इतनी जगह है, ठीक है. गरीब लोग, तुम चाहे तो थोड़े पैसे वैसे भेज देना, बाद में दूंगा तुमको. पेपाल वाइस आईडी है हमारी, श्याम गुप्ता ऑनलाइन से दे देना. एनीवेज, तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई बॉट, ठीक है. हब पे आई हैड होस्टेड 3 or 2 images, out of which I was able to pull this iris one. Probably I will be able to, right? But let's see, because this is 500 MB and it will take some time. So what do I expect now? Error response from daemon, pull access denied from iris, repository does not exist, require login. Docker login is required. Docker login. Okay, Docker login with existing credentials. So बैटरी कितनी बची है मेरे पास? 32%. ओके, चल जाएगी. लॉगिन तो कर दे यार भाई, क्या कर रहा है यार? ऐसे कमांड लाइन पे क्यों दिक्कत दे रहा है मेरे को इतना? व्हाट इफ आई ओपन पावर शेल? ओके, इज इट डॉकर मिलेगा क्या? इफ दिस सपोर्ट्स, ओ भाई साहब ये बढ़िया था. आई जस्ट डू अ डॉकर लॉगिन बिकॉज आई लव दिस वन रादर दैन डूइंग दिस वन, ठीक है. आई लाइक दिस उबंटू वाला. दिस इज मच बेटर, ट्रस्ट मी. बोकू माका से देखो रसाई. एनीवेज, जब तक ये बनाए तब तक अपन थोड़ा कुछ खा लें यार, पेट पूजा नहीं जल्दी से. चॉकलेट खा, चॉकलेट पूजा से दोनों को बोलता हूँ. एनीवेज, बाद में खोलेंगे इसको. Okay, username is Shyam, right? EPIC, okay, and my password was please चल जा, and I'm requesting you please. What if I just open developer PowerShell 2? चल जा भाई, प्लीज बोल रहा, प्लीज चल जा. Okay, build tools, dot dash, okay. I want Docker.
Error response, request cancelled, waiting for connection, exceeded while waiting later. Right. Docker login. सही से चलता नहीं है यार, कुछ भी क्या बोलूँ मैं फिर को ऐसा तो ubuntu भी नहीं चल रहा इधर तो. बट इफ़ आई हैव टू डू इट आई कैन डू इट राइट, ऐसे डायरेक्टली कर लेना, इतना करने की क्या ज़रूरत है. आई कैन जस्ट कम हियर, से पुल है ना, एंड इफ आई पुल इट, it's getting pulled. See this is easy. This was easier, right? Now I don't know how to use this image, please tell me. Okay, I'll say Shyam. Okay, or if I just leave blank, okay. I don't know. ये भी वही देगा एरर. चल कोई बात नहीं, एरर तो मिलते रहेंगे. हाँ, तो डॉकर रन भी कर सकते हैं हम. कूल. यार तो इसका क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा. देखिए डॉकर आइरिस, ठीक है, मैंने इसको पुल किया है, हब पे था, व्यू एंड हब, क्या पुल, ऐसे पुल, मैंने पुल जैसे किया. ओह, इट इज़ मेकिंग इट सेल्फ. द इमेज इज बीइंग मेड. इंटरेस्टिंग. तो रन हुआ है तो ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, कोई बात नहीं, बढ़िया. हाँ चलो रन ना सर, ठीक है. यूर ऑलमोस्ट डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. गेट पुश दिस, ठीक है. बट व्हाट इफ आई हैव टू पुल, तो आई पुल, ठीक है. यार भूख भी लग रही है मेरे को. लव इट. मैं कुछ सीखने को मिल रहा है यार आजकल यहाँ पे. सो नाउ दैट आई एम डॉक्यूमेंटिंग इनफ, so why not share a few things. There's a few updates, that is that on 12th of this month, that is April 2023, I got an internship at a modern data company and it's going great, ठीक है. थोड़ा big screen है, big people need big screens. Anyways, so yep, I got an internship at the modern data company. Am I enjoying the internship? I'm enjoying it a lot. I'm learning a lot. But are you satisfied? Nah. Are you hungry? I am hungry a lot. I want to do the shit regularly. I want to create videos. I want to interact with people. I feel like so free, you know. Well, thank you for hearing me out. And I think this was important for me to take it all out. Because इसमें तो टाइम लग रहा है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा मतलब. I go to have it. See if ये चल रहा है नहीं. refresh. Oh, चल बन गया. Yeah. So if I run this thing, ठीक है. If I run this container here, if I let's see if I say run, मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है. बिकॉज देखो भाई यहाँ पे हमारा ये बन चुका है, ठीक है. दिस इज़ माई डॉकर कंटेनर, ठीक है. नाउ आई डोंट नॉट वांट टू एक्सपोज माई क्रेडेंशियल्स और समथिंग लाइक दैट, सो आई विल से डॉकर रन iris. Now this should be able to make a container for me. Can you please make a container for me? Please. Please make a container, please. Hey, so should I just say run or should I just say build first? ये तो पता ही नहीं क्या अभी तक. Anyways, let's see. How do you pull? Right. Just pull the image, right? Docker image. Okay. तो ये भी हो सकता है. So I'll add one more and I'll say Docker images. Yes. So I have 3 images. One is this, one is this, one is that. ठीक है. And I have this. That means I have 2. ये ना कुछ चम ही रहा है यहाँ पे, बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो I will Docker what the fuck are you not running? चल जाना. थोड़ा बड़ा बहुत बढ़िया सेक्सी लग रहा है. ठीक है. चल तो दिस इज 28 मिनट्स का लंबा हो गया कुछ. तो आई विल से बहुत स्लो हो गया यार, क्या बात है. डॉकर रन अल्पाइन श्याम एपिक आइरिस. श्याम एपिक /iris. This has to run, but this is not running. Now what do I do for it? I can do many things here. Collecting users, deactivate set browser users to false. Okay, I can see some results. Fuck, चल गया. Anyways,
तो ये है हमारी नेटवर्क यूआरएल। आई से कंट्रोल एंड क्लिक। प्लीज़ चालू हो जा, प्लीज़ चालू हो जा। So this is what I made on my Linux system, and this is what it is running. Is it running or not? Please show me something. Show me something. Come on. Come on, please come on. उफ, ये मैसेज कर दिया यार, क्यों 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 यार, ये क्यों दिया? 8501 पोर्ट एक्सपोज था मेरा. What is the problem? What is the problem? Pull push to hub view package series. चल जाए यार, प्लीज़ चल ना, प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा हूँ भैया ना देखो यार. And my laptop is fucking hotter right now, hottest probably. Can you please just refresh for me? What if I run it here also? Docker run Shyam epic / iris. How do I? चल जाए यार, कुछ तो चलो यार, चल ही नहीं रहा है. ये भी नहीं चलने का नाम ले रहा है. इज इट समथिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया लैपटॉप? बट आई डोंट थिंक सो, इतना ज़्यादा टाइम लगता है या फिर इतना कुछ होता भी है उसको. आई कम हियर, आई स्टॉप एन इंस्टेंस, ठीक है. आई विल पॉज दिस वन, राइट. दिस इज बीइंग रन, ठीक है. एफेक्शनेट गांगुली. व्हाट डू आई डू देन? Why is it not running though? Let's try pulling ML app. If that also doesn't run, but probably I learned a lot. That's what my learning is. Okay, it doesn't matter if it run or not, but it does matter if it run. But it's okay. Okay. But how do you pull an image? ये तो पढ़ ही सकते हैं ना. Why to moan or cry? And you can see like what all things you can do, right? So you can just do pull Ubuntu. This is okay. Also you have Ubuntu SHS key, right? Okay. Pull mylist.local testing image test image. Docker pull hashtag dash all dash tags Ubuntu. Okay, Docker image pull. Okay. I'm having a lot of mixed references here. Still I don't know. Docker pull Ubuntu. I'm so sorry. But right now it's रात के 2 बज रहे हैं. एंड अगर अभी भी ये चीज़ नहीं चल रही है, आई एम रियली एंग्री. आई लाइक रियली एंग्री. So I am really looking forward to it, and it is not running. 18% is my battery. That means I only have probably 10 minutes left with me. And I'll try this open again. There's some problem with the app, but it ran perfectly on my Ubuntu, right? I don't know. There has to be a problem. Image called Docker Debian. If no, why Docker engine? I'm really sleepy today now. But this is also not running now. Auto detect external IP, please go to this for debugging hints. What if I just copy this link? Okay, I go to Google Chrome, because Google Chrome is Chrome, right? I come here and I paste it to see if it is running here or not. और इधर भी नहीं चला तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, अपन फिर कल ही देखेंगे इसको. But for today I am really happy that I did it. Exploring a lot of stuff today, ठीक है. Not running. It's a pain in the ass, but yeah, this is the truth, that my app is not running. But anyways, what I will now probably try to do is, so my further steps will be to stop this video, try to figure out as to what went wrong, and probably hint in some description key as to how do you run this app actually, because these links do not seem to be working right. So I have to do something else. Okay, so I will be closing this one right now. I will be closing the servers, right? I will come here, I'll say this, right? Affectionate Ganguly.
because this was running here, right? I'll say inspect GPG key Python version. Ah, shit. I do not have Python version 3.1.3. But it doesn't matter, right? Unless and until you have the compute power left to do that, it shall run, right? But this model was approximately 2 GBs. Now, how much of the space do I have? It's very difficult. It's very difficult, okay? So right now what I'll do is I'll just stop it, okay? I am stopping it and I am stopping the video right now because number one, I'm very tired from the internship. Number two, that I do not find a way ahead as to what has to be done. Probably I'll try to learn what to do next when you get stuck in such kind of loop. And yeah, see you guys tomorrow or day after tomorrow or anywhere. Kabhi bhi. So I'll see you guys in the next video. Thank you for sticking to the end. I guess the only error I just found was that I had 3.8 in my system and this was 3.10. That's why I was facing some problems. But I don't think so. That was also a problem because containers are itself very much okay with running the self-contained apps, right? So yeah, thank you so much for having me or clicking on this video. And yeah, bye. Thank you so much. Bye bye. Bye.